एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है और आज का टॉपिक होगा स्टैटिस्टिक्स फॉर 10th क्लास। टुडे वी डिस्कस अबाउट द मीन, फाइंड द मीन ऑफ द गिवन डाटा, different datas by particular methods. First of all, direct method. In direct method, we assume that mean is equal to sigma x1 f1 oblique sigma f1 1 to n 1 to n. We can write this I1 I for 1 to n, and this is value of I is 1 से लेकर के n तक है। इसको हम कहते हैं सिग्मा, एंड दिस इज फ्रीक्वेंसी और दीज आर दी, हम कह सकते हैं इसको क्लास मार्क, या हम क्लास मार्क भी कह सकते हैं इसको, और ये फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं क्लास मार्क, यानी क्लास साइज भी कह सकते हैं इसको, और ये फ्रीक्वेंसी, ये क्लास साइज, ये फ्रीक्वेंसी। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, in direct method we take a example which is also in question number 1 of this first exercise. Let 0 to फ्रीक्वेंसी है, इसके अंदर नंबर ऑफ हाउस, यानी कि यह है नंबर ऑफ प्लांट्स and number of house. This is equal to 1, 2 से 4 2, and 4 से 6 1, 6 से 8 5, 8 से 10 6, 10 से 12 6, 2, 12 से 14 3. First of all, we take lower limit plus upper limit oblique 2. We find the value of x. We find the value of, this is the frequency, this is f1, and x1 will be 1, 2 plus 4 oblique 2, 3, 4 plus 6 oblique 2 is equal to 5, 7, 9, 11, 13. This is equal to क्लास मार्क, यानी कि क्लास, एंड सिग्मा f1 एंड x1, वी कैन राइट x1 और f1 सेम थिंग है, डोंट बी वरी। इसमें ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, दिस इज इक्वल टू 1, दिस इज इक्वल टू 6, दिस इज इक्वल टू 5, 35, 54, 22, 39, एंड फ्रीक्वेंसी हमारे पास टोटल फ्रीक्वेंसी होगी 3, 4, 9, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 हमारी फ्रीक्वेंसी होगी। ये होगी हमारे पास 7 और 5 12, 12 और 5 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23 और 9 32, 6, 5, 11, 12, 13, 14, 15, 16। ये हमारे पास होगा सिग्मा f1 x1, और ये सिग्मा f1 आ गया हमारे पास। अब हमारे पास मेन इज इक्वल टू
162/20, and this is equal to 81/10 is equal to 8.1. The mean of this data is equal to 8.1. Because these are very small amount of the data, so we use direct method. This is the first question of this exercise, and easily we have find out the mean of this data, and with the direct method, this is known as the direct method. And second method we are told you, in which we use as D. And we try to solve this equation by assuming second method by assuming mean method. In this take if D1 is equal to x1 minus A. This method or direct method we use because we minimize the calculation. To minimize the calculation we use this method is known as the assuming method, assumed mean method. इसमें हमने क्या किया भाई, मीन हमने अज्यूम कर लिया, चल दिस इज दी dx1 is equal to x1 minus a, and mean is equal to d plus a, and d is equal to f1 into d1 oblique f1 sigma f1. ये i से n, ये I1 से लेकर के n तक है, ये सिग्मा है, ये सिग्मा इज नोन एज दिस सिग्मा. Did you use that? Suppose that d1 is equal to x1 minus a. A is assuming your method, जिसके अंदर assume कर दिया कि जो x1 है वो माइनस a कर दिया जाए, वो d1 के बराबर मान लिया हमने. तो ये only for use this method by minimize the calculation. Suppose there is a example, let 10, 25, 25, 40 दे है, क्लास इंटरवल्स है हमारे पास, ये 40 से 55 एंड 55 से 70 एंड 70 से 85 एंड 85 से 100. दिस इज द क्लास साइज. क्लास साइज है हमारे पास ये, या क्लास इंटरवल कह सकते हैं, क्लास इंटरवल है ये. एंड f1 इज इक्वल टू 2, 3, 7, 6, 6, 3 times 6. Now x1 is equal to, this is f1, x1 is equal to क्या, this x1 is equal to lower limit plus upper limit oblique 2, and this is equal to 25 plus 10 यानी कि 17.5, and this is equal to 5, 65, 32.5, and this is equal to 5, 9, this is equal to 4, 7.5, 47.5, and this is equal to 5, 2 by 2, 62.5, and this is equal to 5, 77.5, and next 92.5.
These are the क्लास साइज वी हैव यानी कि दिस इज क्लास जो इंटरवल था ये क्लास साइज लिया हमने, ये इसका मीन ले लिया दोनों इसका क्लास साइज का। एंड लेट d1 is equal to x1 minus a. A is, what is the a? We suppose a is the middle number from where we find the value zeros. 1 0 that became minimum 1 0, and we take other number also for as a assume a, but we take that this number became easy to multiply. So we take 47.5. 47.5 is equal to a, and this a minus इसमें देखिएगा 47.5 माइनस में 17.5 003, यानी कि ये आ गया 30 माइनस 30, ये माइनस का है ये, तो ये माइनस 30 हो जाएगा। इसी तरह माइनस 47.5 में से 32.5 गया 051 minus 15, and here became 0, and this is 62.5 47.5 051. This became 15, and 77.5 into 47.5 003, and next will be 92.5 47.5 05, and this is 4. Now we miss this कैलकुलेशन को हमने इधर कर दिया, माइनस कर दिया। नाउ वी टेक d1 into f1. f1 is equal to this. This is the frequency, and d1 this is equal to minus 60 and minus 15 45 45 0 15 की 90 and 180 30 24 और 27%. These are the datas, and we find the sum sigma f1 d1 and f1 is equal to 105. We have missed the 105, and this will became 15 C for 5 50 minus 15 और कर दीजिएगा 0 सॉरी 5 3 435. This became 435, and फ्रीक्वेंसी टोटल फ्रीक्वेंसी देखिएगा 5 10 और 12 12 6 18 18 6 24 24 30. इसके हमारे पास सिग्मा एफ आ गया है हमारे पास 30, and f1 and d1 is equal to we know that d1 is equal to x1 minus a. Now here multiply by f1 both sides. d1 f1 x1 f1 sigma minus f1 a1 f1, and divided both side. This is sigma f1 and f1 cancel. This became x mean d mean minus a, and x mean is equal to d mean plus a.
दिस इज द सूत्र हमारे पास फाइंड आउट दिस ऑब्लिक 30। डी मीन क्या हो जाएगा हमारे पास 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 5 15, यानी कि 14.5। डी कितना आ जाएगा हमारे पास, डी मीन 14.5 एंड वी फाइंड द ए एंड एक्स मीन इज इक्वल टू डी मीन प्लस ए एंड 14.5 ऑब्लिक 47.5, 0 12 5 4 5 6 62 and x mean is equal to mean of this data is equal to 62 and ये हमारा इसमें आया हुआ है। ये आप समझ लीजिएगा कैसे क्या किया है। इसमें हमें एज्यूम मेथड कह सकते हैं इसको, एज्यूम मेथड। विद द हेल्प ऑफ द एज्यूम मेथड वी कैलकुलेट द अदर क्वेश्चंस ऑफ द स्टैटिस्टिक्स। फर्स्ट एक्सरसाइज हमारे पास मीन निकालने का ही है एंड take an other example. 500, 520, second 520 to 540, 540 to 560, and 560 to 580, and 580 to 600. This is this interval daily wages and frequency F1 is equal to जो frequency है ये frequency 12, 14, 8, 6, 10 and let what is the x, जो हमारे पास x है वो क्या हो जाएगा हमारे पास 510, 530 एंड 550, 570, 590. This is the mean. But here we use that, suppose this is equal to A and D1 is equal to X1 minus A. This is equal to minus 40. This is equal to minus 20. This 0, 20 and 40. And D1 into F1 is equal to हमारे पास आ गया 480, 24, ये माइनस के हैं दोनों, and this is 0 and 120 and 400 and sum of the frequency 6 और 14, 20, 0, 2, 3, 4, 5, 50 यानी कि फ्रीक्वेंसी हमारे पास 50 आ गई। सम ऑफ द सिग्मा F1 is equal to 1 to n is equal to 50 and D1 into F1 is equal to, इस पे हमारे पास 400 से 400 कट गए and this became 320 minus 120. This became 0, 0, minus 2, minus 200. क्या आ गया हमारे पास? And D1 is equal to minus 200 oblique 50 is equal to minus 4. And now X1 is equal to D1 plus A. A is, what is the A? 550 and A is minus 4 plus 550 and this is equal to 546.
This is the mean of this data from this assume method. This is the, by the help of the assume method, we calculate the and this is the easy method to solve the mean, and so on. The next question, in which we find out the frequency of a given data. The following distributions show that the daily pocket allowance of the children of a locality, the mean pocket allowance is 18. First of all, pocket allowance 11 से 13 रुपए 7 आदमियों के लिए, 13 से 15 6 आदमी, 15 से 17 9 बॉयज हैं जो, और 17 to 19 13, 19 to 21 फ्रिक्वेंसी हमें पता नहीं है, एंड 21 to 23 5, and 23 to 25 4. But assume is equal to 18. Find the value. This is equal to 18, and what this is the frequency, and notes and find the x1. This is equal to 4 2 यानी कि 12 12 14 16 18 20 and 22 and 24. These are the x1. Let assume this is equal to a, and d1 is equal to x1 minus a, and this is equal to 18. 18 से -6 -4 -2 0 +2 4 and 6. This is D, and now D1 into F1 42 24 18 एंड ये तो हमारे पास 13 का 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 फ्रीक्वेंसी 2, हमारे पास F2F 20 और 24. Here 24 cancel, and this 20 82 यानी कि हमारे पास आ गया 40 + 2F, and this is equal to D1 F1, and फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ गई 7 से 13 13 9 22 22 और 13 5 3 35 35 और 5 40 44 44 + F,
अब हमारे पास क्या है इसकी वैल्यू 40 प्लस 2f ऑब्लिक 44 ऑब्लिक f इज इक्वल टू 18 and we multiply this 44 into 18 297 792 plus 18f is equal to 14 plus 2f. Now with this 90 आ जाएगा 2f यानी 16f is equal to 40 minus 292. Then this became 792 minus 40 2 5 752 f is equal to oblique 16. Now this one चलो इसको हम काट देते हैं 8 2 से 2 7 6 8 फिर 2 से 4 1 3 8 6 9 3 4.5. This is the main. We find the f is equal to 20. Take and excuse me, this is 40.2f and here 7 अच्छे 13 13 9 22 22 और 13 35 40 44 and 44 plus f is equal to 40 plus 2f यानी कि हमारे पास x मीन is equal to 18 is equal to 14 plus 2f बटे 44 plus f 832 835 44 297 792 plus 18f is equal to 14 plus 2f. यही हमारी इक्वेशन बन जाती है. चलिए देखिएगा, ट्राई कीजिएगा इसको टाइम मिस्टेक को मल्टीप्लिकेशन में. ये हमें एज्यूम मेथड से किया है, ये एज्यूम मेथड से किया है और ये हमारे पास आ गया जैसे दिस इज इक्वल टू डी एंड वी हैव नॉट फाइंड दिस वैल्यू, वी हैव ओनली डी विद द हेल्प ऑफ वी फाइंड द एक्स. This is not d is here is the d is not there and x1 is equal to d1 minus a. We have not put here 18. We have not this assume. No, this is our position is wrong. We have only d1. d1 is never be thought as a mean. Mean is equal to not 18. हमारा x1 is 18 and assume is, we have not need to assume here, we have use direct method and if you don't mind we declare here second time because here is next data is 13
F54, and here is 18, 20 and 22, 24. Now F1 and D1, it be X1, no need for X1 and F1. 84, 54, 18, 5, 23, 20F 110 and 8, 6 and 9, and this is the total. We find out the total, and this is equal to 20F plus 2, 10, 3, 13, 14, 15, 16, 17, 17 और 8, 25, 25, 34, 33, 34, 35, 3, 2 और 1, 3, 4, 5, 6, 7, 752, एंड दिस ऑब्लिक एफ कितना हमारे पास 44 plus F is equal to 18. Now this is equal to 792. 792 plus 18F is equal to 20F plus 752. 752 इधर आ जाएंगे, इसमें से कट जाएंगे, 52 कट जाएंगे. This became 0, 4, and this is equal to 20F minus 18F is equal to 2F, and 2F is equal to 40 and F is equal to 40 oblique 2. This is equal to 20. We use here direct method. We assume method will be not applied because we have not given D. We have given only mean, x mean only, so we use direct method in this question. When frequency and other data find out, we use direct method. Next question is given here. Here is 65, 68. And frequency 2, 68, 71, frequency 4, 71, 74, 3 frequency, and 74, 77 is equal to 8 frequency, 77, 80, 7, 80, 83, 4, 83, 86, 2. This is the class size, and we find the x1. This is frequency. X1 is equal to, what is the x1? Lower limit plus upper limit by 2. 65 plus 68, 3. 66.5 and 9, 13 oblique 2, 6, 9.5, 69.5, 5 दूनी 10, 2 18, 1 19, 5, 10, 18, 19, 12, 13, ये इतना हो जाएगा. नेक्स्ट के लिए 71, 74, 5, 4, 27, 2.5, 72.5,
and this one now 75.2 and 7 8 7 15 2 7 14 2 8 16 78.5 and 163 81.5 and this became 96 84.5. Here we use assume method. Let D1 is equal to x1 minus a. What is the a? Suppose a is equal to 75.2. No, 75.2 minus 66.2, 0, and this is 9. Became 9 and minus 9. It is correct. 9 minus 9, 75.2. Oh, sorry, this is 5 here. 9 and 75 point. This is 5. 75.5 minus 69.5. 0, 6 minus 6 and 72.5 0 3 minus 3 0 3 6 and 9. Now D1 into F1 यहाँ में सिग्मा कीजिएगा, इसमें D1 into F1 9 into 2 minus 18 minus 24 minus 9 0 21 24 and 18. Now 24 18 cancel and this is 3 12. हमारे पास क्या आएगा? F1 into D1 sigma F1 D1 is equal to 12 and here is frequency 2 6 7 8 9 17 24 25 26 27 28 29 30 30 यानी कि हमारे पास F1 sigma F1 is equal to 30 and D is equal to 12 oblique 30, then we can say that 4 oblique 10.4. 0.4 is हमारा डेल्टा 1 आ गया, D1 आ गया हमारा A is equal to D1 plus A. Then D1 is equal to 75.5 plus 0.4 is equal to 75.9. This is the mean of this data. We use here assume method. Here, what is this? In which what type of question we use here? Here, assuming method. यानी कि फिफ्थ क्वेश्चन हमारे पास है ये. हाँ बिल्कुल ठीक है, यही इसका आंसर है हमारे पास.
and now take fifth question. अज्यूम करना, हमने ए को इसको माना था मिनिमम जो जीरो कर सके उसको यूज करना है हमें. अज्यूम मेथड है, अज्यूम मेथड से हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं. नाउ वी फाइंड द मीन ऑफ द नेक्स्ट क्वेश्चन whose data is given in the table. मेनली इसके ऊपर कंसंट्रेट करना चाहिए आपको, मल्टीप्लाई करने में और डिवाइड करने में. नाउ नंबर ऑफ मैंगोज, number of mangoes is equal to 50 to 52. Number of boxes 15 box, and 53 to 55 110, 56 to 58 is equal to 135, 59 to 61 115, and 62 to 64 is equal to 25. This is frequency and this is data number of mangoes. Like mean of these mangoes निकाल लीजिए, इसका यानी कि upper limit and lower limit is equal to, this is equal to 51, 54, 57, 60, and this is 63. This is our x1 frequency, and we assume, we multiply, minimize the multiplication, we assume d1 is equal to x1 minus a. This is equal to a. Suppose 57 is equal to a, then this is equal to 50 minus 6 minus 3 0 3 6. And now f1 d1 on the chicken number, 330, these are minus, this is 0, 5 3 और 1 4, 345, 25 का 150. ये हमारे पास टोटल नंबर्स ऑफ आ गया 5 9 495 माइनस में 0 2 4 4 2 0 घटाइएगा 5 7 75 आ गया हमारे पास. ये पॉजिटिव का बचे, पॉजिटिव है हमारे पास 75. फ्रीक्वेंसी देख लीजिएगा, हमारे पास फ्रीक्वेंसी का सम देखिएगा 20 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4. ये हमारे पास था d1 इंटू f1 बटे में f1 सिग्मा 400, एंड दिस इज इक्वल टू 4 एकम 4 4 8 32 पॉइंट 4 7 28 4 5 20, and this became 0.1875, 0.1875, and now x is equal to 57, यानी कि d प्लस a is equal to 57.1875, and our answer will be, check here, 57.19.
but this is exact data of this answer. He is saying 57.19. This 75 change into one extra, but we have 57.1875. This data is more near to the answer. Next. Today we are going to finish this exercise here. Tomorrow we will again take this data exercise more and grouped more, and extra we use that u is equal to ud d1 into u is equal to x1 minus a. You may say that x1 is equal to a, sorry, h, there is h, and this is equal to a plus hu mean. H is the class size, and today we are finish this exercise here, and in statistics class we will meet again. Thank you very much for watching. Thank you. इसमें कैसे कराना है?